सर अभी तक हम अंतरिक्ष यात्रियों की बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। हाँ। और आप अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है अंतरिक्ष में, ओह! जहाँ पर हाँ। लोग रहते हैं। अपने जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो वहाँ जाते हैं, हाँ। वहाँ पे कई कई महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक भी बिता देते हैं। ओहो! अच्छा। और कई वहाँ पर परीक्षण चलते हैं, शोध चलते हैं। हाँ। तो आज हम जानने वाले हैं हाँ। कि आखिरकार उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन होता कैसे है, अच्छा। और वो किन किन परेशानियों से गुजरते हैं, हाँ। क्या क्या चैलेंजेस का सामना करते हैं, हाँ। और वहां पर रहकर वो हाँ। करते क्या है। हाँ। ये बताओ। भी एक सवाल है आप लोगों की। हाँ। तो इस वीडियो में संक्षिप्त में बताया गया है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। यार ये बात तो सही है कि मैं वीडियो मैंने कई बार अपने वीडियो देखी है। हाँ। लेकिन वो मैं ये क्या ये लोग इतने दिन रहते हैं, ये लोग वहाँ करते क्या है, ये बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। अब सर वाली वीडियो बताना तो इससे ऐसा लगता है कि सारे डाउट अपने क्लियर हो जाएंगे बाबू भाई। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है भाई कि वो वहाँ रुके भी हैं, गए भी हैं, अब चले भी गए और वो पहुँच भी गए। अब जाकर उन्होंने वहाँ करेंगे आप तो वीडियो ये मतलब अच्छा एक बार ये भी कहा सर्चिंग में यानी बहुत ही कम वक्त में, लेकिन हाँ जानकारी जो मिलेगी अच्छी मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। बाबू भाई मेन बात तो ये रहेगी अपनी कि उनकी दिनचर्या क्या रहती होगी, क्योंकि अपना काम तो क्या है, अपन घर चलो चले जाते हैं, सो जाते, उठ जाते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब वहाँ पे वो जाके वो करते क्या आखिर, ये देखने लायक वाली बात रहेगी। ये आप लोग देख लो, लगाइए सर इसी बात। This is the International Space Station. For over 2 decades, it has been our home in outer space. But it's a home unlike any other. The ISS is the size of a football field. It orbits the Earth at over 23 times the speed of sound, and with a construction cost of around $160 billion US. भैया ये तो दिखने का अजूबा है ना भैया, मैंने ऐसा देखा जाए तो यकीनन है वो तो है। हाँ यार, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी जानकारी में अभी तो ये इससे महंगी चीज मैंने अभी तक नहीं देखी, दुनिया में होगी भी नहीं यार। The space station is the most expensive structure ever built. And as impressive as all that sounds, it's actually the people that make the ISS exceptional. Human beings from all over the world living together in a place beyond borders, beyond atmosphere, beyond gravity. मतलब कहने का ये बस खाली एक अमेरिका नहीं, दुनिया का हर देश का कोई ना कोई आदमी तो यहाँ आते आता है। So let's take a look inside the ISS and see what everyday life is really like 250 miles above Earth. Alright, the first thing we need to do is get ourselves strapped into a spacecraft and prepare to blast off. To reach the ISS, you've got 2 options. Option 1, the Russian Soyuz, a compact capsule that's been flying crews to the station since the very beginning. It's a design that's been in use since the late 1960s and has gone mostly unchanged since the era of the Soviet Union. यार मेरे को सोचता है सोवियत वालों ने 1960 में इस चीज को वहाँ छोड़ दी, तो यार मैं जितना समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक साथ देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब बाबू पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा देखते हैं अपन क्या है। हाँ देखो अपन क्या है। Option 2, the SpaceX Crew Dragon, which has a sleek design on the outside, a spacious and comfortable layout on the inside, and is built for the modern era with mostly touchscreen controls. When the hatch finally opens, the crew floats into their new home, and this is where the real experience begins. The ISS isn't the carpeted open concept layout you've seen in a Star Trek TV show. बाबू भाई कैसे गए अंदर, वो बताना फिर से करके यार। क्या बात है यार, क्या भाई अब देख लो भाई वहाँ जब पहुँच गए, वो भी समझ अब समझ जब पहुँच गए तो मन की जो खुशी होती मेरी खुशी जाहिर करने का अंदर बस निराला लगा उनका, मेरे को मजा आ गया देख के। बहुत बढ़िया। It's more like a floating tunnel system, a series of connected modules, each about the size of a small bus, arranged in a T-shaped layout. The American side includes Destiny, the main science lab, Unity, the central hub, and Tranquility, where the life support and crew quarters live. Europe has the Columbus module, while Japan runs Kaibo, a high-tech lab with its own research facilities. The Russian segment includes Zarya, the very first module ever launched, and Vyazda, the main living quarters and control center.
बाबू भाई देखा जाए तो बहुत सारे देशों ने इसमें योगदान दिया है यार, देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ये बात सही कह रहा तू यार. In total, there are more than 15 pressurized modules offering about 13,700 cubic feet of habitable space. That's roughly the size of a 6-bedroom house. अच्छा. But don't expect much legroom. Every surface is packed. Laptops, cables, camera gear, lab hardware, air ducts. There's no such thing as wasted space in the ISS. अच्छा. Moving around can be a challenge at first. Without gravity, concepts like up and down don't matter like they do on Earth. Your sense of direction actually comes from fluid sloshing around inside your ears. So once you begin floating in space, that fluid-based system gets scrambled and the brain becomes disoriented. यार वो देने में बहुत मुश्किल है. हाँ वो तैरना भी है फिर वो कहीं कुछ उड़ते हुए रहना तुम्हें हमेशा. हाँ यार देखो आप कान के पीछे वो जो चल पदार्थ है ना वो भी इसलिए हो गया. और क्या बहुत दिक्कत वाला काम है यार भैया. But the crew adapts quickly. Color-coded handrails, clear labels, and lots of practice help astronauts move smoothly and in the right direction. Once we are settled into the station, it's time to think about getting to work. Astronauts don't come here for leisure time. Every hour of every day is strictly scheduled and there is lots to do. यार ये जो अपना रहने नहीं उसका जो गुजरने चले कि वो फ्री टाइम में लेकिन यहाँ देख ले एक घंटे का भी होटल नहीं है तो भैया. हाँ तो ये क्या करे आगे यहाँ. But what is a day anyway? The ISS will orbit the Earth once every 90 minutes. अच्छा हर 90 मिनट में. बताओ बाबू कितनी बड़ी बात है यार, देखा जाए तो हर 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हूँ. सोचो आप बहुत बड़ी बात है भैया यार. That means astronauts experience 16 sunrises and sunsets every 24 hours. This rapid-fire day-night cycle can seriously mess with a person's internal clock, and that's actually very bad for your health. To counter this, the crew follows a standard 24-hour Earth day. The ISS uses special lighting systems that mimic natural sunlight to help maintain their sleep pattern. अच्छा यार ये बात तो सही है कि आपको जो अपना शरीर है ये शरीर इसको बिल्कुल मजबूत करना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ के जो है उसको आप सहन कर सको. अगर वो सहन नहीं है तो आप तो रह भी नहीं सकते हो. सही बात है, कोई भी मुंह उठा के जा भी नहीं सकता नहीं. हाँ कैसे चले जाएगा कोई जंगल या कोई थोड़ी है ये वो है अंतरिक्ष. That's how they avoid a condition known as orbital insomnia that plagued early space explorers. It's also very important to combat boredom in space. Now that might sound trivial, but when people find themselves with nothing to do, we have a tendency to become more impulsive, more irritable, more volatile. And that's not what you want when everyone is confined to one space with no way out. To make sure that no one has enough free time to get weird, astronauts' days are meticulously scheduled down to 5-minute chunks. ये अच्छा है बाबू भाई, उनको पहले से शेड्यूल दे देते हैं वो बताने के लिए. नहीं तो फ्री टाइम में जाने का क्या करेंगे वो, इतने टाइम में इतना करना है, इतने टाइम में ये करना है, पहले शेड्यूल बना देते हैं. क्या उनके लिए एक सेकंड बहुत कीमती क्योंकि वो दिन में थोड़ी होता अंतरिक्ष में यार तो इसीलिए वो. This is all thanks to the operations planning team at Mission Control. There are actually multiple ground control centers for the ISS that are located in America, Russia, Europe, and Japan. So trying to decide what time it is in space can come with its own problems. The international partners settled on Greenwich Mean Time, or GMT, meaning that the ISS operates in the same time zone as the United Kingdom. On the space station, your workday begins at 6 a.m. and lasts through to 9:30 p.m. अभी तू खुद देख ले 6:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक अपना वैन तरीके का होता तो हम 4 घंटे में क्या करेगा वो. यहाँ पर बहुत लंबा टाइम है यार. फिर अब 6 से 9:30 बजे कितना बड़ा टाइम है यार, बहुत लंबा टाइम. फिर Astronauts will typically start their day just like everyone else, getting cleaned up and ready for work, but this is where life begins to get complicated. There is no shower. Without gravity, the water won't go down the drain. It'll go everywhere, and that's not good. Water behaves in a very unusual way once you take gravity away. Water wants to stick together and form into spheres that float around. Water also wants to stick to other things. So if you put water on your face, it'll stick. It won't drip off. If you put water on your toothbrush,
it'll stick there as well. So to wash yourself, you basically just put water on a cloth with some soap and do a sort of sponge bath. Not luxurious, but effective. बाबा भाई यहाँ तो बहुत चैलेंज है यार, पानी के साथ इतना चैलेंज है तो दूसरे कामों के साथ क्या चैलेंज होगा यार? मैं भी यही दिक्कत वाला काम है यार। देख के हैरान हो रहा हूँ यार। हाँ कि ये वहाँ पहुँचते हुए कैसी कैसी मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, वो अपने आज मैंने पड़ गया यार। बाबू भाई है ना, सुबह उठते से आपकी दिक्कत चालू, मुंह धोना, कुल्ली करना, पानी मारना, कितना दिक्कत का काम हो गया अपने आप में। अब ये अपना होते हैं पानी का गए मामा तो पानी को भी बुलबुले बनना जमरिया हो। हाँ एक जगह ठहरता भी नहीं हो। हाँ। अलग अलग दिशाओं में जा रही हो यार। अब वो बोलो वहाँ तो वहाँ हक तो कैसे होंगे, सोचते मेरे को तो ये इसका लग रहा है ये करते कैसे होंगे यार। हाँ। यार जब पानी उड़िया है हाँ। तो अब ये मैं उनका जो मन है वो भी तो उड़ता होगा। यकीनन यकीनन होता ही होगा। The weirdest part is that you can't spit toothpaste out. It would just go flying in every direction, so you have to swallow it. Getting dressed is easy because you're not allowed to bring your wardrobe into space with you, so most astronauts just wear the same t-shirt every day for about 2 weeks at a time. Pants typically get worn for a couple of months, and then when the laundry gets too crusty to go on, we don't do a wash, we just throw our clothes in the trash. दिक्कत है ना मेरे वहाँ तुम कपड़ा नहीं मतलब कोई काम जो तुम्हारा दूसरा जरूरी वो तुम वो नहीं कर पा रहे हो, अभी दिक्कत नहीं तो क्या है यार। ये तो कहने को बोला चांद पे देख रहे हो, वो चांद पे की क्या है यहाँ तो देखो मगर कितनी है यार। अरे बाप रे बाप कैसे करते हो, मैं तो ये दिक्कत का सामना है भैया, पूरी बहुत दिक्कत का काम है। अगर मैं वहाँ चला गया और जो ये इतनी वजह से ये अगर मैं यहाँ देखने में अगर मेरे को इतना वो हो रहा और कभी मैं वहाँ चले जाऊँ बाबू मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँ, देख के मैं तो बेहोश हो जाऊँगा। Now let's talk about the oddly fascinating part of life on the ISS, the toilet. In space, you can't just rely on gravity to pull things down, so the ISS uses suction to do the job. For solid waste, astronauts strap themselves to a small seat, which is really small. Once you are done with that business, suction pulls everything into a plastic-lined container. Then you use a stick. अच्छा ये चक्कर है। वो इसमें गान वो चुका देंगे वो क्या यार तेरी के तुम क्या हो रहा है यहाँ पे भी? अब बिल्कुल हो रहा है, अभी देखे जा अब यहाँ चलो मैं तो ट्रीटमेंट जा देखे तो भैया चलो। To jam your plastic bag of waste down into a storage bucket. These are changed every 10 days and eventually they get ejected into space along with all of the other trash and it just burns up in the Earth's atmosphere. अब कोई तो टट्टी को आती है छोड़ो अकेला यार। हाँ बताओ। हाँ यार और वो उससे जल्दी तो क्या यार क्या देखने का मौका लग रहा है। अगर थोड़ा फर्ज करेगा वो जला ही नहीं और मेरा निकलना और मेरे मुंह पे आगे तो क्या कर लोगे किसको दोष दोगे तुम? क्या यार तू For urine, astronauts use a funnel attached to a vacuum hose designed for both men and women. Suction pulls the liquid into a tank where it's filtered and recycled into drinking water. वो मुद्दे जगह अगर वो जाएंगे तो वो अंदर फिरेगा तुम्हारे पप्पू को तो। हाँ यार बहुत बाप रे बाप। अरे मेरे को तो ये जान के हैरान हो रही है बाबू भाई, मूत का पानी में फिल्टर हो रहा है वही पीना आपको। अरे यार क्या क्या दिखाओगे आप यार, ये बाकी रह गया सब क्या है? इससे भी जाओगे क्या? दुनिया में आए हो तो हर चीज के आप आदत डाल दो नहीं। On average, 70% of all water on the ISS is recycled. It would be impossible to operate in space without a closed water cycle. So, yeah, you drink your own pee and everyone else's pee. But you also breathe it as well. We're getting weird now, but this is fascinating. Oxygen is a precious commodity in space. The ISS has a ventilation system that is constantly filtering the air, removing carbon dioxide, and recirculating it. But eventually, you use up all of the oxygen. To solve this problem, a portion of the recycled water is sent into an electrolysis machine. This uses electricity to split water molecules into their base atoms, hydrogen and oxygen.
And then the oxygen extracted from the recycled pee is added back into the station's air supply. यार इसमें तो ये जो मतलब ये हिसाब से अगर देखा जाए तो अपना मूत्र वो कितना काम का है और ये ना उसके लिए अपन ये मूत्र पानी डाल के और वहाँ देखो कितना बहुत कीमती हो गया मामला वहाँ पे, यार नहीं? बाप रे बाप ये समझ लो आपका ये वहाँ पे सोने से ज्यादा कीमती अपना मूत्र हो गया वहाँ तो बस All right, now let's eat. On the ISS, food typically comes in two main varieties. क्या अच्छा, अब यहाँ ये मगर कि चटनी वो खा रहे हैं हाँ यार, हाँ यार First, there's thermostabilized food, packed in green pouches, basically a space version of military MREs. अच्छा अच्छा, Second, there's freeze-dried food with all the moisture removed. हाँ Astronauts simply add hot or cold water, अच्छा। rehydrate the meal, and it's ready to eat. मतलब कहने का एक वो सूखा खाना ज्यादा मिलता हो गया हाँ। अब बाबू भाई, खाना तो उनके पास उतना ही है, अब खुदा ना खास्ता वो गिर जाए, सड़ जाए या कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर मौत तो पक्की है, खाना नहीं मिलेगा तो। ये बात जाहिर सी बात है। खाना उनको लिमिटेड इतना सब चलते हैं वो लोग यार पहली बात तो यही है कि वहाँ तक जाने के लिए अपन जैसे तो लोगों तो काम बस की बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ट्रेनिंग होती होगी वहाँ पे, उसके बाद ये कुछ पक्का होता होगा मामला, उनको चुनते होंगे फिर जाते होंगे वहाँ पे लोग। ये तो एरा गिरा नथु का ना मुंह उठा के चल दिया तो फिर उसका क्या मामला है? वापस ही नहीं आया वो तो मर के वापस आया वो। वापस ही नहीं आया वो तो वही को वही But the astronauts can't just eat anything they want. सही बात For है example, bread is banned because the crumbs can float around and clog the equipment. The same goes for potato chips. The Simpsons did get that one right. बाबू भाई ऐसी चीजों को सख्ती से मना है वहाँ पे कि जो बिखर जाए, तो क्योंकि वो बारी बारी पुर्जे में उलझ जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। हाँ ये बात है अगर वो अगर वो ढूंढना भी फिर दूसरे के काम कौन सी चीज ये अच्छा करा, इस चीज का ध्यान रखा उन्होंने। No soda either, because without gravity, carbonation doesn't separate in your stomach and just builds up inside you, leading to something called wet burps. ओहो, दारू वगैरह सब मना करना नहीं है वहाँ तो ये चीज सोडा ही मना था, दारू का सही। हाँ यार अगर वो गिलो लेकर आ रहे थे समझ लो आदमी तो हाँ पागल हो गए लेकर यकीनन सही कहा। मना भी है Essentially just spontaneous vomiting. On Sunday evenings, everyone on the ISS, Russians, Americans, Europeans, Japanese, we all get together for a ritual pizza party. And you'll need the calories because every astronaut is required to put in 2 hours of exercise per day. हाँ, यार वहाँ पे भी व्यायाम क्यों करवा रहे हैं वहाँ व्यायाम का जरूरत है यार अगर कहते हैं कुश्ती लड़ोगे क्या That's cardio and resistance training. There are treadmills and stationary bikes with straps to hold you down. There are resistance bands to flex your muscles. And there's even this crazy looking piece of gym equipment that uses vacuum pistons to provide a full bodybuilding routine with squats, deadlifts, and bench press. अच्छा अच्छा क्या कमाल है यार। बाबू अपने ऊपर नाला होना चाहिए बहुत यार। बड़ी लाल होनी चाहिए वो वहाँ जाके अंतरिक्ष में व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपन कुछ नहीं कर पा रहे। या बाकी ये क्या नहीं? बिल्कुल यार सही बात बोली तुमने यार अब मुझे तुम्हारा दो से नहीं है नहीं हाँ। अब वो दो से चौको उठेगा अगर उसको ऐसी जगह तो क्या करेगा वो पहले बात तो ले जाएंगे ही नहीं। वाला काम है यार। With up to 600 pounds of resistance. 600 पाउंड का वजन, कमाल है यार। We are doing all this because in space, the body doesn't have to fight against gravity. So muscles weaken and bones lose density over time. अच्छा 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 इसलिए करते हैं कसरत, ये मामला है नहीं मेन तो उनका। कुल मिला के देखा जाए अगर ये लोग वहाँ कोई कसरत नहीं करेंगे तो देख लो ये उनके बारे में जाएगी This can make you sick while on the station, but it बिल्कुल becomes a very serious health problem once you arrive back on Earth. बिल्कुल Even with the exercise routine of an athlete, जरूरी the भी है environment of space can have strange health effects. The most common is the space snuffles. Without gravity, your bodily fluids have a tendency to accumulate in your head, making you very congested. Another common health problem that's taken a little more seriously is the effect of space on your vision. अरे बाप रे अच्छा यह बात बिल्कुल सही है अब ये अगर इससे निकल देगा अपने दिमाग में भी ऐसे पड़ेगा अपनी नजर नहीं उससे पड़ी है देखो आप, सही बात है भैया ये देख भाई
मैंने तो कमजोर है बोला मैं वहाँ पढ़ गई तो मैं तो वहाँ अंदर यकीनन ध्यान रखना जरूरी है उसका। बहुत जरूरी ध्यान रखना है। We used to think this was caused by the rush of blood to the head, but problems with vision are now being linked to changes in the liquids surrounding the brain and spinal cord that create excess pressure inside the skull. The result is that astronauts become nearsighted, meaning anything in the distance gets blurry. Anyway, with health and hygiene taken care of, it's time we get to work. अभी तो जो जितनी बातें होती है ना सब जन होती है काम की बात है वो अब बताएगा यार। ओ इसी का काम की बात है देखना पड़ेगा। देखो अभी तो ये जन कैसे रहना क्या खाना क्या पीना कैसे क्या। The ISS is one of the most advanced science labs ever built. Its main mission is to explore science in zero gravity. It's a unique environment where researchers can study how the absence of gravity affects biological, physical, and chemical processes. Things we just can't replicate on Earth. For example, NASA has conducted studies on muscle atrophy and bone density to understand aging and disease on Earth. Astronauts themselves are both scientists and subjects, essentially becoming guinea pigs in the unique human experiment. ये तो बाबू देखा जाए तो बहुत गलत बात है जो बेचारे वहाँ पे जा रहा है रिसर्च कर रहा हूँ उनके ऊपर तुम गलत कर रहा हो यार। ये तो कुछ नहीं उनके ऊपर रिसर्च ही कर रहा हो तुम यार ये अभी अपन ऐसे सुनना है कि रिसर्च होती है ना चूहा है मतलब ऐसे अब तुम तो इंसान में कर रहे वो भी उन लोगों पे जो मासा है गलत। अब इसमें अपन बाबू पे कुछ नहीं कह सकते जाने वाले उनकी खुशी से जा रहे हैं हो सकता है उनको तनख्वाह भी बहुत हाई फाई मिलती होगी ये मामला भी तो है। They are also working on space agriculture, testing how crops like lettuce and mustard greens grow in orbit. Because if we are planning missions to Mars or beyond, astronauts will need to grow their own food. In 2015, ISS crew members harvested and ate the very first space-grown lettuce. Oh, कमाल है यार। ये पिता सोचना अंतरिक्ष में फसल भी उग गई खा भी रहे हैं यार ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। बहुत बड़ी बात है यार। बाबू ये तो मेरे को मंगल ग्रह पे जाने की प्लानिंग लग रही है पक्के। मेरे को भी ऐसी लग रहा है यार। But science isn't their only job. Astronauts also handle routine maintenance. They check life support systems, clean air filters, update software, and sometimes even repair the walls of the space station. अच्छा यार सब जब तो सोचता हूँ इनका जो बचा रहा है ये हिसाब में देख रहे हैं इनके पास ये काम नहीं है सैकड़ों काम इनके पास तो यार। And when something outside the spacecraft needs fixing, they suit up for a spacewalk, also known as extravehicular activity. But getting ready for a spacewalk is a complicated process. अच्छा बाबू भाई एक ग्रेविटी नाम की फिल्म देखी थी मैंने वो ऐसे ही बेचारे बाहर जाते हैं और छूट जाते हैं और खो जाते हैं हमेशा के लिए। अरे बाप रे बाप। They spend around 4 hours of prep time checking equipment and making sure everything fits just right. And then the spacewalk itself is typically going to last between 5 and 8 hours. बाबू इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा होगा मेरे हिसाब से कि धीरे धीरे पकड़ के चलना पड़ता होगा ना वहाँ पे एकदम तो फल्लांग मार के कोई जा नहीं सकता यार वो दूसरा आकर है ही नहीं वहाँ पे जैसे भी तो ये दिक्कत है अगर ये चीज वहाँ पे होने तो इतनी दिक्कत का काम नहीं है। ये बात भी सही है तो ये उनको इतना टाइम लग रही है। So this is an all-day commitment, and yes, the spacesuit does include a diaper. When you finally call it quits for the day, you'll get a chance to relax in your own personal sleeping quarters. You enter through one of 4 small doorways that are built into the walls of the habitation module. Inside the bunk, you get about as much space as an old phone booth. Every astronaut has their own laptop computer for keeping in touch with the people of Earth. ये अच्छी बात है बाबू भाई क्या कि वहाँ पे जाके उनके घर वालों से परिचय करना है यानी बातें कर लेते हैं पर ये दुख की बात है लगी कि उनका कंपार्टमेंट कितना छोटा है यार। अब ये जैसी जगह हुई उसी सबसे बनेगा धरती तो है बड़ा बनाने कुछ अब वो जो जितनी जगह है उसकी सीमित जगह उनको इतना काम करना है। And they'll typically keep personal items and tools in there as well. The only challenge is that everything needs to be attached to the wall with Velcro to stop it from floating around. You even need to secure your own body to the wall by zipping up into a tethered sleeping bag. Unlike your typical camping gear, this bag has armholes that allow your limbs to just float freely. So that marks the end of our day on the space station, and like all good things, the ISS itself
अरे भैया अभी तू खुद देख ले, अब वैसे में आदमी तो कैसे सोएगा यार, इस जगह भी इतनी सी है, अब ऐसी जगह पे तो देखो तो ये नहीं है यार। अब बाबू मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ ऐसा, मैं हाँ। खड़ा हुआ हूँ कि लेटा हूँ कि सो रहा हूँ, कैसे क्या हूँ, वो तो गोल गोल घूम रहा है यूं करके। बोलो अब देखो आप, अब समझ ही नहीं पड़ेगा आखिर उनकी कंडीशन संपट ही क्या बोल जाए इंसान यार। है। Has an end date as well. NASA and its partners plan to bring it down around 2030. After over 3 decades in space, the station will make a controlled descent into Earth's atmosphere, burning up into smaller chunks that will sink to the bottom of the South Pacific Ocean. But although it may seem like the end, it really isn't. अब कह 2030, हाँ। अभी चले 2026, इस हिसाब से देखा जाए तो 4 साल में इतनी महंगी चीज को इन्वेस्टर को कर देगा, ताजुब की बात है यार। बताओ आप, हाँ वो कितनी बड़ी चीज वो है यार। चीज जल भी जाएगी, कहाँ गिरेगी वो। हाँ वो देखो महासागर, हिंदू महासागर, हाँ यार। बड़ा सी फिगर में तो उसको जब भी गिरेंगे ना उसके टुकड़े करके गिरेंगे। अच्छा। ऐसे ऐसे कैसे नहीं फेंक देंगे, वो उसके टुकड़े करेंगे फिर गिराएंगे। In fact, NASA has already shifted its focus to commercial space stations. Companies like Axiom Space and Blue Origin working on private orbital labs. These platforms will carry forward the legacy of the ISS, hosting astronauts, running experiments, and maybe even welcoming tourists. लो बल्लो वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि पर्यटकों का स्वागत करेंगे, तो क्या हम लोगों को वहाँ पर भेजने की क्या मंशा है उनकी? क्योंकि आम आदमी वहाँ गया, फिर वहाँ से आया, फिर उनको स्वागत हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। मेरे भैया जब तूने कितनी सारी दिक्कत बता रही, 15 साल तो तूने दिक्कत बता दी कि ये दिक्कत है, या ये दिक्कत है, या नहा नहीं सकते, या खा नहीं सकते, या पी नहीं सकते, तो भैया जो जब इतनी दिक्कत है दिक्कत, तो फिर वहाँ आम आदमी थोड़ी जाएगा वहाँ पर मरने को यार भाई। यार इतने पैसे लगाया कर, मैं वहाँ जाऊँगा तो उससे कब मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, आ रहा तो घूमूंगा, सही बात है बिल्कुल। जो मैं वही करूँगा। आज हो गई यार, अमेरिका में आधा पैसे लगेगा, अमेरिका घूम के और वहाँ इतना पैसे लगाने के बाद भी वहाँ जाऊँगा, इतनी दिक्कत है, अपने बाप से दे भी है तो बात। बाबू ये कितने अच्छे तरीके से ढंग से उन्होंने वीडियो बनी और कितने अच्छे तरीके से अपने को बिल्कुल बताया यार, कैसे क्या मैडम गई, कैसे क्या वो अटैच होएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर उनको छोड़ेगा, कैसे क्या खाते पीते हैं, हकते मूतते हैं, फिर कैसे क्या उनका वातावरण अंदर का बनेगा। हर प्रक्रिया जो भी इंसान की जो यहाँ पे है उसको कैसे करना, किस ढंग से करना, फिर उसका टाइम, फिर वो कितनी देर में होना चाहिए, एक एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके बारीकी तरीके से समझाया, यानी एक एक सेकंड कीमती है वहाँ पे, एक एक सेकंड कीमती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये हमें जो देखा जाए जिस भी अंतरिक्ष जाना है, हाँ जहाँ तक मेरा ये मानना है कि एक अंतरिक्ष रहते हुए करोड़ रुपए का खर्चा होता होगा तो ये आदमी वहाँ तो यकीन है पहुँचता होगा। भलते में तो उड़ के कोई भी नहीं पहुँच सकता। हाँ, थोड़ी पहुँचेगा यार, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है उसके बहुत लिए। लंबी प्रक्रिया है। अच्छा फिर एक बार ये कोई है नहीं, अब रायगढ़ कितनी ऊंचे जा रही है, अब इतनी जो ऊंचे कुछ भी जगह और रास्ते में गारंटी के सर को कोई हादसा नहीं हो, हादसा भी हो सकता है, तो फिर अब वो खतरा को देगा, उसके कोई गारंटी नहीं है, नहीं उसकी गारंटी नहीं हुई। आदमी पहुंचा तो पहुंचा, हाँ नहीं पहुंचा तो रास्ते में खत्म। और क्या यार ये बात मुझे ऐसी लगी, जब से धरती है यहाँ तो सब आपस में ही लड़ना है, लेकिन देखो वहाँ ऊपर सब में मिलकर काम कर रहे हैं। क्या वो एक नहीं अनेक देशों के लोग, सही बात, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है अपना। क्या ऐसा वाकई में वीडियो बहुत शानदार, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत अच्छी लगी, टॉपिक भी इतना बेहतरीन लगा कि देखने में, समझने में, सुनने में मजा आया। इसी तरह का और टॉपिक लगे और किसी वीडियो के साथ फिर दोबारा आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।